Hello. Good morning, friends. A very warm welcome to all panelists and you who could make it up in the early morning. Another round of applause. Please, round of applause for panelists first. And then another round of applause for Fly Reporter team and IR team. I think this is the first time in our industry such a big platform is being created, wherein suppliers, manufacturers, and OEMs are under one umbrella. I don't recall any of such platform. A big learning today also in the morning, wherein we could see the lamp lighting ceremony. A lot of teamwork was involved in just lighting the lamp. I hope this teamwork percolates now after this session to other OEMs also, and we see this industry consolidating. First of all, let me tell you the topic. The topic is why furniture firms and OEMs struggle to grow. This is a very bold topic, believe me, because most of us, when we travel, people say furniture industry is growing. But individually, are all OEMs and furniture makers growing or are they struggling? Because if you see, there are a handful of OEMs who have crossed 100 crores barrier in turnover. So let me start my question from Mr. Nitin Vade first. He's a veteran in this industry. He has seen the supplier side, manufacturer side, every side. So Nitinji, do you agree with this topic first of all? Good morning. It's a very valid question, very important for a stage where the furniture segment get. And what is your take on this? Why people struggle in this? What are the major reasons for the struggle? Yeah, I have been observing panel food industry and the furniture manufacturers, how they have been setting up and growing or not growing way back from 1985. My experience has been that a lot of furniture units are set up, but they lack the vision. They really don't understand what is the type of furniture that they have to focus on. Life, in simple terms, is very difficult to climb the ladder. To climb the ladder, you will have good materials, good designs, above all, a good vision. But unfortunately, many of the units don't take support of these efforts, but take the easier road down the stairs with pricing as the main factor and diluting the quality. Do you mean to say the USP is diluted and price is the prime? The USP for success is in integrity of the materials and the quality to grow. People should not mistake that there are tremendous opportunities in specialization. It can be healthy furniture, it can be space saving furniture, it can be moderate luxury furniture, hospitality furniture, school furniture. So many opportunities are available for growth of the furniture industry. But finally, people don't realize that they need to specialize and land up competing with each other. And then price is something which is the only thing remaining in their hands. And it pulls down the complete industry in a downward trend. So Satyamji, let me come to you. You are also like third generation or the fourth generation in this business. And there are people who are from first generation, second generation. So what is your take? Why people are struggling in this industry? Good morning, everyone. I feel the biggest challenge for OEMs start with the availability of land. So, in earlier times, because the infrastructure was not well built, the factories used to be very near to the city. If the factories are very near to the city, the rent cost is high, the land cost is high, and there is no finance available on land. It is only available on land and building. The rent cost goes up beyond a point. It is not viable for the OEMs to have a very large factory. If they go away from the city, then the challenge is infrastructure, availability of power, availability of water, availability of the township, where will be the skilled laborers coming in from, where will be
they staying, the living conditions are challenging if they go further. But one positive thing that I foresee is with the new infrastructure that is coming, as the roads are being built, the industrial corridors are being built, this problem sooner or later will get solved with the factory sizes going larger in sizes. The factories cannot be at workshop level. If we compare ourselves to other countries, or if we say that 100 crore plus factories, but 100 crore plus factories need to be minimum 1 lakh square feet plus. So I feel land is the first challenge. The second challenge for OEMs is finance. Finance till today is not available for the greenfield projects. It's only available for brownfield projects. And the cost of finance till now was very high. Recently, the cost of finance is getting much more reasonable, and it's still on higher side. But I feel for MSMEs, it should be much more aggressive. There should be some support for MSME, because this is the bracket that will help generate employment and grow beyond 100 PR. So you mean to say that finance, the land, and the resources are three major reasons which we learn. Yeah, the third resource is the skilled labor. And skilled labor, because the skilled labor is not available in ample, so generally the new OEMs would poach the skilled labor from nearby factories. So if a skilled labor coming in from my next door factory is coming, instead of 100, coming at 110, 120, what value addition is he bringing to the table? That's the same work what he was doing over there, and the same work he's going to perform in the new factory. So if my cost goes up, my selling price goes up. If my selling price goes up, our competition from China says, let both the factories sit pretty and we'll supply the material. So we lose entire business to other countries just because we are not creating the pipeline of skilled laborers. But I feel with the council coming in and working on this, sooner or later, even this problem will get addressed. Absolutely. Swasti ji, I'll pass the same question to you. You have also been in this industry since long, and we have all, in fact, learned from. What is your take? Why people are struggling? एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो भी हम बिजनेस प्लान करते हैं, वहाँ प्लानिंग फेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज वी ऑल आर फर्नीचर OEM. फोर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: मैन, मटेरियल, मशीन एंड योर विजन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, राइट, तो वो क्या बोलता है, ओके मशीन आ जाएगा, सपोज 50 lakhs में हमारा मशीन आ जाएगा, तो वो मशीन के बियॉन्ड नहीं सोचते हैं. ओके मेरा बिजनेस 50 lakh में स्टार्ट हो जाएगा, बट they don't think about the working capital, they don't think about कि मार्केटिंग कैसे होएगा, सेल्स कैसे होएगा. वो सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करते हैं. ओके मशीन परचेज कर लिया, उससे काम हो जाता है, उससे काम नहीं होने वाला है. यू नीड टू हैव मैनी थिंग्स. सो इन माई ओपिनियन स्ट्रगल जो स्टार्ट है वो प्लानिंग फेज से स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज वेन एवर यू प्लान ए प्रोजेक्ट, आपको एक कंटिजेंसी प्लान लेके चलना पड़ता है कि सपोज यू आर प्लानिंग ए प्रोजेक्ट ऑफ 1 CR, सो you should have some contingency money, say 25 lakhs rupees over and above the 1 CR, because project में cost escalation is very common. तो क्या होता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज प्लानिंग फेज में ही वो सस्टेनेबल इशू आ जाते हैं उनको, बिकॉज वो उससे आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इश्यूज आ जाते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो भी आज OEMs काम कर रहे हैं वो सब इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे हैं कि दे आर नॉट कीपिंग गुड मार्जिन्स इन देयर बिजनेस. वो सिर्फ प्राइस पे काम कर रहे हैं. मार्केट में दे आर कॉम्पिटिंग ऑन प्राइस, दे आर नॉट कैलकुलेटिंग देयर ओवरहेड्स, दे आर नॉट कैलकुलेटिंग देयर मार्जिन्स प्रॉपर्ली. So that is also a big issue. But who decides the price? Is it the customer or the OEM? Basically, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो कस्टमर ही प्राइस डिसाइड करता है, OEM नहीं डिसाइड कर पा रहा है. that is also a trouble, because OEM आपस में ही प्राइस कंपटीशन कर रहे हैं. तो कस्टमर बोलता है मुझे X OEM X प्राइस पे मटेरियल देता है, then why you are charging higher price from me? But profit is blood of an organization. If you will not keep margin, you will not grow. So it applies to everything. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, इसको मैं अभी के लिए शेल्फ कर रहा हूँ. व्हाट आर द डिफरेंशिएटर्स? मतलब लेट अस शेल्फ इट फॉर सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, व्हिच इज आई फील ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बट लेट मी कम ओवर टू मनोज. मनोज जी, आप ऑफिस फर्नीचर में एक
अच्छा नाम है आपका, आपने बहुत फास्ट पेस पे ग्रो किया है. ऑफिस फर्नीचर एज ए कैटेगरी भी बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है. बट स्टिल हम ये देखते हैं कि हैंडफुल ऑफ ओईएम्स हैं जो इसमें थ्राइव कर पा रहे हैं. बाकी सब वही रन ऑफ द मिल और स्ट्रगल कर रहे हैं. ऐसा आपका क्या मानना है, क्यों ऐसा है? जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इंडियंस के साथ में है कि हम कोई भी मटेरियल चाइना से लेके आएंगे उसकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, या कोई यूरोप से लेके आए उसकी कॉपी करने की कोशिश करेंगे. हम अपना डिजाइन डेवलपमेंट पे काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि मतलब कंपनी बिना कुछ करे हम इमीडिएट 1000 करोड़ 2000 करोड़ की कंपनी बन जाए. पेशेंस के साथ में अगर डिजाइन डेवलपमेंट पे काम किया जाए तो अपना इंडिया के अंदर, अगर हम बात करते हैं रिटेल वाला मार्केट, किचन, उसका तो बहुत बड़ा मार्केट है ही. ऑफिस फर्नीचर के अंदर भी कंपटीशन के नाम पे 3 4 5 कंपनी पूरे इंडिया के अंदर है. तो अगर मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करूं, 2008 में स्टार्ट करके आज की डेट में हम लोग 100 करोड़ प्लस की कंपनी बन गए और सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है. और हम एक यूपी के अंदर काम कर रहे हैं, यूपी नोएडा में बोलते हैं लोग कि इतना ये है वो है, कुछ भी नहीं है ऐसा. अगर हमारा माइंड सेट क्लियर है हमें क्या करना है तो सब कुछ पॉसिबल है. और अपना प्रोडक्ट पे अगर हम काम करते हैं, मेनली डिजाइन, कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट लेके आ रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो सारी प्रॉब्लम सोल्व होंगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. गवर्नमेंट लैंड देने के लिए भी बैठी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी 24/7 मिलती है. बहाने ढूंढने के लिए बहुत मिल जाएंगे, पर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगर काम करते हैं तो इंडिया भी चाइना के साथ में चल सकता है, चाइना से ज्यादा कर सकता है. सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, पर हमारा थॉट क्या है उस चीज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. हम सोचते ही नहीं है 1000 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की बात या 10 साल बाद वाली बात नहीं सोचते. हम बस आज को लेकर के कि आज हम 50 करोड़ कर लें, एक BMW गाड़ी आ जाए, एक अपना बंगलो बन जाए. हम ये नहीं सोचते कि यार 10 साल बाद हमारी कंपनी या हम जिस कंट्री में कम से कम अगर रोजगार यहाँ पे ये देंगे तो 5000 आदमियों को रोजगार हम दे सकते हैं. तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थॉट प्रोसेस का फर्क है. मेरे को तो यही लगता है. आपका एग्रेशन देखे ही बनता है मनोज जी, और डेफिनेटली लोगों ने खूब इससे आई नो फायदा उठाएंगे. ये आपने जो बोला, डिजाइन डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसको अगेन वही हमने शेल्फ कर रखा है क्वेश्चन को. नीति, आई कम टू यू. नीति, यू हैव one of the pioneers in this industry and you have fought it through and you have seen all the almost various industry cycles now. So industry के different cycles आपने view किए. What is your take on this? Why people struggle in this industry? What are the major reasons? I think, first of all, getting almost the last, you were at a disadvantage because most of the learned people have shared, part of my thoughts. But, Definitely, that's not a disadvantage. You can consolidate on those points. It's an if advantage. I add on to it, so one is because we are still largely unorganized. Most of the companies here are still single entrepreneur owners. So most of them are still firefighting. We are struggling, right? Like he rightly said, business plan nahi hai. Aap, you hear people around and you feel, oh, this is a very lucrative industry. You kind of do a superficial research in terms of, acha, itne ghar ban rahe hain, this is the kind of furniture that's So coming there is in. no business plan. You mean There to is say. no business planning. There is no 5-year vision. There is no backward calculation in terms of, again, like it was rightly Working said, capital and all. the land, people, taking all costs into account and collaborative work. There is no teamwork. I mean, for the longest time, I think our industry does not have an association which represents absolutely. together their concerns to the government, which kind of takes the incentives which we need. Almost every industry has export promotion Yeah, I totally councils. agree on that. I Yeah. think this is a right forum. Pragat ji is also sitting here. I think I have also done a small study on this industry. Iska size almost 2 lakh plus crores ka hai. I don't know. There are various figures floating in the market, but this. See, even if we are unorganized still segment, not we are consolidated 85% industry. unorganized. Why can we not build that team together? We are a huge space. अगर हम वो unorganized को organized ही करने जाएंगे ना, so I think we are much beyond what China has done. Absolutely. And India is blessed with a huge population, so its internal demand is also very high, apart from international markets. So I think our friends will also totally agree on that. That it's like Rahul, I brought in intentionally in the last because you are from that part, a very important part of the industry. Means you are working on lots of initiatives, which will definitely, lot of our panelists have raised an issue of manpower, trained manpower, retention, all those soft skills. So I think
that is why I wanted you to bring in the last to bring in a different perspective. What is your take on why industry is struggling from your point of view? थैंक यू, नमस्कार। सी, हम काफ़ी देर से इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेट्स गेट सर्टन फैक्ट्स क्लियर। इंडिया में फर्नीचर के नाम से इंडस्ट्री रिकग्नाइज नहीं है। तो अगर हमें कुछ चेंज करना है तो सबसे पहले तो ये थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा कि इंडिया में फर्नीचर पहले इंडस्ट्री की तरह रिकग्नाइज हो। Very nice. एक छोटी सी big hand to Rahul for raising this issue, and that too on this platform because क्योंकि हम फिगर्स की बात करें तो 1,25,000, कोई 2 लाख कहीं पर। आई डोंट नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दोस फिगर्स एंड हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट। क्योंकि अगर इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री है या हम इतना अच्छा कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को हमें उतना पुश देना चाहिए या हमें उस तरह से रिकग्नाइज करते हुए करना चाहिए। जैसे सत्यन जी ने भी कहा कि आज कोई नया काम चालू करता है तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स ही बहुत सारी है। अगर आप कुछ उन सेक्टर्स में देखेंगे जहां पर गवर्नमेंट पुश कर रही है उस इंडस्ट्री को, वहां वो बेसिक प्रॉब्लम्स की टेक केयर की जाती है। वहां पर लैंड इजीली अवेलेबल किया जाता है, आपको बाकी फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल कराई जाती है। उस इंडस्ट्री को कम से कम थोड़े समय के लिए सीधी जोन में डाल के वहां बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हम एज एन इंडस्ट्री वो एडवांटेज अभी तक नहीं ले पाए। थैंक्स टू जीएसटी एटलीस्ट 2014 के बाद में कॉटेज इंडस्ट्री से हम लोग बढ़ के अब कंसोलिडेटेड वे में इंडस्ट्री की तरह दिख रहे हैं। थैंक्स टू 2020 जब चैंपियन सेक्टर्स डिक्लेयर हुए थे, इंडिया ने गवर्नमेंट ने मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग को अमंग्स द टॉप 20 चैंपियन सेक्टर्स इंक्लूड किया। So when we talk about that, the first problem starts with recognition as an industry, and that happens अगर इंडस्ट्री साथ में आएगी और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगी। Then comes the second point, हमारी इंडस्ट्री क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ आता है स्टैंडर्डाइजेशन का। चाहे हम प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, चाहे हम प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, नए रिसर्च की बात करें, नए टेक्नोलॉजी की बात करें, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आज ऐसा जहां हम ये कह सके कि एक कंसोलिडेटेड वे में इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज पास ऑन हो रही है और उस नॉलेज के बेसिस पर आज का यूथ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हमारी इंडस्ट्री में इच्छा से आ रहा है। मैं आई गेस ऑल ऑफ यू वुड एग्री, majority of the people who would have joined your companies or even if you would have started your business, आपने वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए चालू किया था। ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ अलग से आ रहा था। सो आई थिंक सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सेकंड recognition of the industry and then creating standards to attract the youth of the country today and even the people who are engaged in our industry who are working right now to upgrade their skill sets. So what I take key takeaway from your point of view is that standardization is one biggest challenge, followed by it is not recognized as an I'll put it in the order first. It is not recognized as an industry. I would just like to add a third point to it. See, India is a very different story than China. We keep comparing the story. China के पास में 37% एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है, इंडिया के पास 1% है, वो भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे जाता है। तो अगर हम चाइना को बीट करने की बात कर रहे हैं, पहले तो हम ये क्लैरिटी ले लें कि हम इंटरनल डिमांड को बीट करने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बीट करने की बात कर रहे हैं। Absolutely. अगर वो क्लैरिटी भी OEMs को रही तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। 35% का अगर हमने 1-2% भी ले लिया तो बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। Very nice. We know that for any business to grow, there are 4 critical parts of, or you can say 4 pillars of any business, which is money, material, machine, and manpower. So I feel our panelists will also agree on that. You can add more points to this, but this is my take. So I'll again start with Nitin ji. Nitin ji, you are from I'll treat you as from material side. So what is your take? Why people struggle, or what are the reasons of Indian landscape needs to improve on material side? Basically, what is happening that in India, we have a variety of material producers. Some of them are following the right path of maintaining the product quality. Some are doing imitation game. Recently, one of the reputed companies launched HDHMR with green pigment. Now, today, the market is flooded with duplicates, with MDF being just colored green. Now, the common man has absolutely no knowledge how to differentiate between these materials. And then the industry is getting blamed for the wrongful use of the material by Nitin the ji, on OEMs. one side we say consumers are getting more educated. Consumer बहुत educate हो गया है, और दूसरी side से हम ये बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चर ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं common man in India is not aware about the
raw material qualities at all. Secondly, particularly the particle board, for example, the price discrimination or the price point has gone down so low that it has become like a daldal. You know, people have to come out of this rut by producing quality material, and then only the industry will start to grow. Today, each of the, I would say, the most of this competition is seen in the 85% of the unorganized sector, and their survival is dependent only on price. And nobody wants to talk anything about the quality parameters what are expected from their product. सत्यम जी, मैं आप पे आता हूँ, आप मशीनरी साइड से हैं, तो व्हाट इज योर टेक, व्हाई? सो मशीनरी साइड से पहले तो हमको स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या वॉल्यूम बेस्ड है या वैल्यू बेस्ड है। अगर वॉल्यूम बेस्ड है तो एक बार मेरा वॉल्यूम अचीव हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे मैं वैल्यू की तरफ जा सकता हूँ, थोड़ी वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। अगर वैल्यू बेस्ड है तो मैं धीरे धीरे वॉल्यूम की तरफ जा सकता हूँ। थोड़ा सर हमारे ऑडियंस के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वॉल्यूम बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड को, बिकॉज उन लोग को समझने में आसानी हो जाएगी कनेक्ट करने। या श्योर। तो जैसे वॉल्यूम बेस्ड बोलेंगे 8x4 का बोर्ड 32 स्क्वायर फुट, 15% की वेस्टेज निकाल दो 27 स्क्वायर फुट। उसको अगर आप बोलो कि मैं समझो 150 रुपए का मेरा खरीदी है और मैं 250 रुपए स्क्वायर फुट बेचता हूँ, 100 रुपए का मेरा ग्रॉस मार्जिन है, तो मतलब 27 इंटू 100 2700 स्क्वायर फुट, 300 दिन काम करें तो 8,10,000 रुपए। तो एक बोर्ड मेरे को ग्रॉस मार्जिन मेरी जेब में 8,10,000 देता है। तो जो वॉल्यूम बेस्ड कस्टमर है वो सोचेगा कि मैं दिन के अगर 10 बोर्ड एक्स्ट्रा काटूं तो एक साल की एंड के अंदर सेम जगह सेम लेबर सेम पावर के अंदर मेरे को 81 लाख रुपए मेरी जेब में एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी। जो वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन, अगर वो लैकर कर रहा है, वीनियर कर रहा है, लैकर कर रहा है, कुछ सॉलिड वुड कर रहा है, तो मोर ऑफ वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी। तो जैसे कैबिनेट मेकिंग, क्या ये दोनों स्ट्रैटेजी साथ साथ चल सकती है, अलग अलग ही रखनी चाहिए? आप बिल्कुल चल सकती हैं, साथ ही चलनी चाहिए। जो कोई भी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, इट डिपेंड्स। अगर आप वॉल्यूम बेस्ड है तो आपके डिजाइन्स जो हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, आपके जो मशीन्स हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए। एफिशिएंट का मतलब जिसका सेटअप टाइम इतना मायना नहीं रखता है जितना साइकिल टाइम मायना रखता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी वैल्यू बेस्ड है कि अगर आप प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, आपकी वर्कशॉप की साइज छोटी है, अगर आपके पास ज़्यादा क्लासिकल मशीन हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं हैं, तो आपकी वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ पे आपका फोकस शुड बी ऑन हायर ग्रॉस मार्जिन रादर देन वॉल्यूम, क्योंकि इतना वॉल्यूम उसको मिल नहीं रहा। एक बार उसने अगर वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी है तो वहाँ पे डिजाइन्स जो हैं वो इनोवेटिव होने चाहिए। जैसे वहाँ पे स्टैंडर्ड थे, यहाँ पे इनोवेटिव होंगे। जैसे वहाँ पे मशीन्स एफिशिएंट थी वॉल्यूम बेस्ड में, यहाँ पे मशीन्स इफेक्टिव होंगी। इफेक्टिव का मतलब जैसे वहाँ पे मेरा सेटअप टाइम छोटा था और साइकिल टाइम इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, यहाँ पे मेरे लिए सेटअप टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइकिल टाइम इतना मायना नहीं रखता। मतलब मेरे को सुबह में कुछ और बना रहा था, दोपहर को कुछ और बना रहा हूँ, मेरा बैच साइज जो है वो छोटा है, तो वो फोकस जो है वो। बट आपको क्या लगता है कितने परसेंट OEMs ये सब फैक्टर इन करते हैं, या मेजरली पीपल इसी में स्ट्रगल करते हैं ज़्यादा बैलेंस बनाने में? अननोइंगली उनको ये बात पता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। बस खाली मैं OEMs को एक ही चीज बोलूंगा कि एक ही क्वाड्रेंट में मत लेना। इवेंचुअली तो आपको दोनों चाहिए, वॉल्यूम बेस्ड भी और वैल्यू बेस्ड भी। बस एक ही क्वाड्रेंट में मत रहना कि जहां पे आपका वॉल्यूम छोटा है, वहां पे अगर आप अपना मार्जिन भी छोटा रखेंगे तो आप पैसा कब कमाओगे। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। राहुल, I'm coming back to you with this on trained manpower. Where is the challenge? Why people are not, what we see, trained manpower is a big issue. So, see, I've been into this almost 3 years now, into thick and thin of core working towards this cause and all. पहली चीज ये है कि क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता है लोगों को, तो उनको अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी नहीं पता है। तो अगर आज आप एवरेज इंजीनियर देखेंगे या बीकॉम का बच्चा देखेंगे जो कर रहा है, वो शायद बिना नौकरी के घूम रहा होगा, लेकिन उससे हमारी इंडस्ट्री के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी अवेलेबल नहीं है। सेकंड,
जो एग्जिस्टिंग फोरम्स हैं जहां से लोग अभी तैयार होके आ रहे हैं या फिर इस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं, वो है हमारा एग्जिस्टिंग आईटीआई सिस्टम, which is actually not beneficial at all. ITS you are saying you are not beneficial at all? जी, आईटीआई के अंदर में, इंडिया के अंदर में अभी फिलहाल 460 आईटीआई हैं ऑन पेपर एंड 17,500 सीटें हैं. लास्ट टाइम का एनरोलमेंट परसेंटेज था 40%, 7,500. I agree because दिल्ली में तो शायद एक भी कॉलेज अभी नहीं हाँ, बचा. तो मैं कहूँगा अच्छा था कि परसेंटेज कम ही था, क्योंकि उतने कम लोग ही गलत चीज सीख पाए. क्योंकि अभी जो हम सिखा रहे हैं वहां पर भी जो आईटीआई में चल रहा है वो नहीं जरूरत है. अगर आप अपने पड़ोस की भी कोई आईटीआई में जहां वुड वर्किंग या कारपेंटरी सिखाई जा रही है जाके देखेंगे, बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री आपकी आंखों से आंसू आना पक्का है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू ऑफ द केसेस जो है उसको. अब बात हुई प्रॉब्लम की, चैलेंज की, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जहां जहां पर भी ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वहां पर इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं आसपास में. हमें एज एन इंडस्ट्री ये ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि हम उन जगहों को रिवैम्प करें, वहां पर हम बच्चों को बेसिक एजुकेशन या फिर बेसिक ट्रेनिंग जो है वो दे पाएं. मैं यहाँ पर मॉडल की बात करूंगा, जर्मनी का मॉडल जो है, जहाँ पर इंडस्ट्री खुद रन करती है ड्यूल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जहाँ बच्चा क्लासरूम में सीखता है, लैब में सीखता है और अप्रेंटिसशिप अपनी इंडस्ट्री में आके करता है. अब आप देखेंगे तो इंडिया में जो हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. इंडिया में बच्चे को नहीं पता है, वो आता है, जुड़ता है, एज अ फ्रेशर जुड़ जाता है, आपके यहाँ पर 6 महीने से लेकर 12 महीना 18 महीना निकालता है, टाइम करता है, आप पैसा भी देते हो उसको और वो सीख रहा है कि ना अनस्ट्रक्चर्ड मैनर. इसी जगह पर अगर हम अप्रोच को चेंज करते हुए जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर इंडस्ट्री की मदद से उसको रिवैम्प करें, और जो जरूरत है वहाँ पर, अगर वहाँ पर जरूरत मशीन ऑपरेटर्स की है तो हम उस तरह से रिवैम्प करें उसको. अगर वहाँ पर जरूरत हमें स्मॉल वर्कशॉप्स के अंदर में छोटी मशीन, क्लासिकल मशीन्स को चलाने वालों की, तो हम उस तरह से करें, तो वहाँ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, इफेक्टिवली वहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे. क्योंकि किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं है कि इंडिया के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रेनिंग के हिसाब से बदल सके. तो मैं अब एक इफ आई स्टेप इनटू अ न्यू ओईएम शूज, मैं नए ओईएम्स के नजरिए से देखूं तो वो कहाँ जाए, किससे बात करे, कैसे पता लगे उसको कहाँ से ट्रेन मैन पावर आएगी? अभी तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है कोई भी नए ओईएम्स के लिए, क्योंकि फिलहाल दे आर ओनली बैक बोरिंग इन स्टीलिंग राइट नाउ एंड यू डोंट रियली हैव एन ऑप्शन. क्योंकि आपने मशीनें खरीद ली, जैसा अभी सत्यन बता रहे थे अभी कि आपने मशीनें खरीद ली, कोचिंग और वो आपने सारी लेकर आ बातें गए, आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल दिया, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल दिया. अब अगले दिन से अगर आपको 15,000 का आदमी 25 में भी मिल रहा होगा तो आप लगाएंगे, क्योंकि आपका मीटर चालू हो गया. So that is the problem. So in this case, what we are doing is that we are creating those small training centers, training facilities, tying up with the industry. जो मैं आपको मॉडल की बात कर रहा हूँ उसी मॉडल के ऊपर में, ताकि सेटअप चालू हो सके और वो लोग वहां पर धीरे धीरे ट्रेनिंग ले सके. इनफैक्ट नए ओईएम्स के लिए तो सबसे पहले सलाह ये होगी कि पहले वो बिजनेस प्लानिंग समझ लें कि करने क्या वाले हैं. अधिकतर प्रॉब्लम वहीं चालू हो जाती है, और अगर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो वहाँ सोल्यूशन काफी हद तक आपको सारे पार्ट्स. समाधान हो जाएगा वहाँ पर. मनोज जी, मैं आप पे आता हूँ. मनी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का, और वो एक बॉटलनेक भी हो जाता है कभी कभी. तो आप क्या गाइड करेंगे नई ओईएम्स को कि ऐसे कोई एवेन्यूज हैं जहाँ से वो फंड्स में उनको हेल्प हो सकती है, या मनी जनरेशन के लिए क्या किया जाए? नई इंडस्ट्री लगाने से पहले हम लोग किसी प्राइवेट फंड्स में ना फंसें, बैंक के पास जाएं. बैंक आज की डेट में काफ़ी एमएसएमई के लिए, न्यू इंडस्ट्री के लिए फंडिंग दे रहे हैं और काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे हैं. और स्टार्टिंग मेरे ख्याल से तो अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, जैसे अभी बता रहे थे, अगर बिजनेस लाने वाली प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई तो बाकी प्रॉब्लम सोल्व की जा सकती हैं अगर आपके पास में वो है. पर एक्सपीरियंस कोई भी एक दिन में नहीं आने वाला है, वो टाइम लगेगा. और फंडिंग भी इंडिया में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जब से मोदी गवर्नमेंट की बात करते हैं, एमएसएमई के लिए काफ़ी सपोर्टिव है, नई इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सपोर्टिव है. और अभी तो जो एक स्कीम आई हुई है इनकम टैक्स वाली भी, आप अगर कोई नई इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं 15% इनकम टैक्स में भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो उसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं. एमएसएमई आपने कहा कि रूट से ये लोग जा सकते जो हैं. अभी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ 2020, मतलब ये कोविड के बाद से शायद ये कोई स्कीम आई है, उसमें हम लोग 15% इनकम टैक्स में अपना ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं. बट कभी कभी स्कीम्स पेपर पे अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली क्या ये विजिबिलिटी मिल जाती है लोगों को? आपका क्या अनुभव नहीं है? नहीं, देखिए, बोलते काफ़ी लोग हैं, पर जब हम करने को निकलते हैं तो ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं लगा, या मुश्किल काम कुछ भी नहीं है. सब कुछ होता है, पेपर पे भी होता है, पर एक्चुअल में भी हो रहा है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह पेपर पे ही है.
I'm sure I request Pragat ji to whenever he publishes something. So maybe this kind of guidance, if they can take it up, so people will benefit. I know you have a magazine specially running for this segment. So Niti, I'll come to you now with some tricky question on consumer behavior kind of. Customer बहुत demanding होता जा रहा है. They are becoming very demanding, and lot of OEMs which we visit are मतलब kind of they put pressure on them with new design, new everything. So what is your take on this? मतलब what do you advise to new OEMs and how should industry tackle this? I completely agree. Customer is very demanding, but there is somewhere that you have to find your core strength. So जब आप अपने या आप नया establish कर रहे हैं, तो भी हर चीज में घुसना हर एक के लिए possible नहीं है. आपको अपनी core competency या एक strategy पहले लेके चलनी है. What is the area that you want to get into? What kind of furniture specialization that you want to get into? Have your machinery and manpower aligned accordingly, of course. And coming to the designs now, इंडिया में आपके अपने इनहेरेंट डिजाइन्स बहुत हैं. अगर मैं लूज फर्नीचर की भी बात करूं, our Indian furniture manufacturers, if you see traditionally that hand carved, handcrafted furniture, we have an amazing range, and that is also somewhere dying in the country because हम क्या है बहुत easily we are aping Flat pack पे market shift हो रही है थोड़ी. चाइना में क्या बन रहा है, इंडोनेशिया में क्या बन रहा है, आपने ला के यहाँ पर डंपिंग करना शुरू कर दिया. Sorry to interrupt, but Niti, don't you feel कि जो ये हमारे designs हैं, they are very bulky. इसमें lot of manpower, lot of skills are involved. Whereas flat pack में you can scale up production or yes, लेकिन दोनों की मार्केट अलग है. आज की डेट में अगर आप हैंडमेड और जिसकी बल्कि की आप बात कर रहे हैं, the kind of demand it has in US and Europe, trust me, is manifold. जिस तरह की प्राइसेस आप ड्रॉ कर सकते हैं. प्रॉब्लम आती है क्वालिटी में, फिनिशिंग में, स्किल जो हम राहुल से बात कर रहे हैं, स्किलिंग में, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नुएंसेस. अदरवाइज इस तरह के प्रोडक्ट्स एलीट होम्स में बहुत पसंद किए जाते हैं. सॉलिड वुड फर्नीचर, हैंडक्राफ्ट, इट इज अ स्किल विच वी ऑल ओन. एंड फ्रैंकली अगर हम उसमें अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, सो आई फील द वर्ल्ड इज अ मार्केट. फ्लैट पैक तो आज की डेट में आपने 4 मशीनरी लगा ली, एवरीबडी कैन डू इट. अगेन फ्लैट पैक में इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी आ सकते हैं जब आप डिसाइड करें कि आप कौन से स्पेस में जाना चाहते हैं. लाइक दे सेड स्पेसिफिकली ऑफिस फर्नीचर, स्पेसिफिकली होम रिलेटेड फर्नीचर, होम में भी क्या करना है, ताकि अकॉर्डिंगली आप उसमें स्पेशलाइज कीजिए. There are niches which can be created, जिसमें फिर some designs you have to focus on designing. So if you have to pick between generalist and a specialist, what but will you I advise think, to people? Certainly a Generalist नहीं, specialist. Certainly a specialist. Specialist. So Generalist everybody can be, but if you can find your core competency and become a specialist in what you do, then you really have no competition. I think this is a very important point. किसी भी business में एक niche ढूंढना पड़ता है, एक जो एवेन्यू जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. जैसे एक अच्छा बैट्समैन बैटिंग में स्ट्रॉन्ग है, वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकता तो शायद. So I don't know. This was a cricket season, so I came up with this. So moving to next part, we have seen again. I'll come to cricket only. We have seen earlier there were test matches. Then 50-50 came, and कीरत जी से मैं एंड में सारा हम लोग ने क्या अच्छा किया, खराब किया, क्या डिस्कस है वो करेंगे. So we have seen when 50 overs cricket came, lot of test playing, good test playing batsmen struggled. सुनील गावस्कर ने भी 50 ओवर में 36 रन बनाए थे. Then 2020 came, lot of 50 over batsmen struggled. So the idea is that whenever the market rule of the games change, lot of people struggle. So now let me come to the last section of this panel discussion, which is a kind of a rapid fire round. तो मनोज जी आपसे शुरू करूंगा. आप हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं इसमें. जो नए जनरेशन के प्लेयर्स अब आ रहे हैं, आप भी नए जनरेशन के ही हैं वैसे, बट हाउ न्यू OEMs कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग लैंडस्केप. आपके टॉप 3 या 4 पॉइंट क्या हैं उनके लिए, क्या एडवाइस है आप? एक तो सबसे पहले हमारे को प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है और मैक्सिमम कंपनीज वहाँ पे फेल होती हैं. हम लोग क्लाइंट को खुश करने के लिए हर एक चीज़ को बोल देते हैं, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, और हमारी स्पेशलाइजेशन उसकी वजह से किसी भी एक चीज़ में नहीं हो पाती. तो हमारे को अपने प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करना है, उस पर काम करना है, उसके अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन लेके आनी है, और क्लाइंट को मना करने में भी कुछ भी नहीं बिगड़ता है, मना करने की आदत भी डालनी चाहिए. अगर हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं, हमने क्वालिटी अच्छी बनाई हुई है, तो क्लाइंट्स अपने आप से आपके पीछे आएंगे ही आएंगे. Niti, your quick
3 or 4 points. On the changing landscape, what is your advice to new people who want to join this industry? Don't show desperation. I think हमारे यहाँ problem यही है, we get desperate to sell at whatever price. अपने पे confidence नहीं है. So सबसे बड़ा lacuna मुझे वही लगता है कि हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे लोग ये नहीं समझेंगे डेस्परेशन टू सेल एंड बिल्डिंग अप ए सेल्स में फर्क क्या होता है. तो आई फील दिस विल हेल्प. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Yeah, so desperation to sell, what I'm trying to say here is, आपके पास जैसे अभी मनोज जी ने बोला, कोई client आया, आपने बोला हाँ जी हो जाएगा, without even giving it a second thought that do my capabilities lie in doing something like that in terms of will I be able to add value in real terms, in monetary terms for the customer as well as for my own business. It's not just about making a turnover, but eventually making profit. And desperation to sell in the sense कि आपकी क्योंकि एक एसोसिएशन ही नहीं है, आपस में कॉन्फिडेंस नहीं है, अंडरकटिंग में हम लोग एक दूसरे का नुकसान करते करते इवेंचुअली अपना नुकसान कर रहे हैं. सो हैविंग दैट कॉन्फिडेंस, आप एक वो कल्चर देखें ना, अगर बॉम्बे और दिल्ली में भी वो कल्चर डिफरेंस है. इन मुंबई people will not sell below a certain price, but here in North people will cut down. वो आप किसी की कॉस्टिंग लेके आएंगे, वो बोलेगा वो 50,000 में दे रहा है, अच्छा मैं 48 में कर दूंगा. Why that desperation? So that is something which I think the new age people have to understand. Work on your core competencies, work on your designs, and it's okay to say no to a customer. So maybe culturally North is bordering a lot of countries, so we've been fighters throughout. That's one of it. नितिन जी, what is your take? 3 से 4 पॉइंट जो आप नहीं हुए हमको देना. I think the success of the OEMs is directly proportional to the quality of the materials that he is going to use. Uske survival is dependent upon what raw material inputs he is providing. So this is the key, that his brand will only grow when people are satisfied with the performance. And that is the starting step for his growth plans, I would say. सत्यम जी, OEMs को मैं बोलूँगा कि जैसे आप अपना फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं तो वैसे आप सबसे पहले अपना कैश फ्लो डिज़ाइन करो, कैसे पैसा आएगा कैसे जाएगा, सीक्वेंशियल है. पहले कैश फ्लो डिज़ाइन करो, फिर आप अपना ग्रॉस मार्जिन डिज़ाइन करो कि मैं कितना ग्रॉस मार्जिन कमाऊंगा, फिर आप अपना नेट मार्जिन डिज़ाइन करो कि मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा, मैं इसको कैसे स्केल अप करूंगा और कैसे बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा. सो कैश फ्लो, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये सीक्वेंशियल है. इसमें आप कोई भी अगर आप उसको सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो वो स्ट्रगल मोड में चला जाएगा. और जैसे मैम ने कहा, डेस्परेशन आएगा कि मैं या मेरे को कैश फ्लो नहीं हो रहा है यार, सस्ते में बेच दो, बिजनेस के लिए डेस्परेट हो जाएगा. बेस्ट क्वालिटी के लिए हमको बेस्ट डिजाइन्स, बेस्ट मशीन्स, बेस्ट रॉ मटेरियल, प्रोसेस नॉलेज और एटीट्यूड, ये कुछ चीज़ों की ज़रूरत है. मेरे को लगता है कि ये OEMs के लिए, सब OEMs के लिए वैलिड है. स्वास्थ्य जी, क्विक 2 or 3 रैपिड फायर पॉइंट्स. देखिए, प्रोडक्ट सारे सिमिलर हो सकते हैं. कोई भी OEM प्रोडक्ट बनाएगा, मटेरियल देगा, मटेरियल में भी सिमिलर, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल. आप मार्केट में ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल अवेलेबल है. लैमिनेट्स आर कॉमन, एक्रिलिक आर कॉमन, एवरीथिंग इज कॉमन right now. I think you can differentiate only by one thing, that is the service. So we all should focus on our service. So service will be the key differentiator. Secondly, आज की डेट में क्या हो रहा है, हम लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की जो डिमांड है वो सारे प्रोडक्ट हमको बनाने हैं, राइट? बट यू कैन बी एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग. So you produce everything, but you should have one expertise which should be your USP, so that you can play a vital role in that product range. Yeah. Rahul, last winding up comments before we bring in Kiran ji. I'll give the 3 S and a request. So strategy, which is basically to do with planning. So it's covered quite a bit with what Satyan said and the people have also said. Then specialization. You have to find what is your thing that is going to work in the market, and even that can help you grow. Even one product can actually help you grow. And finally, the skills, because if you don't have that, you can't really run your business, irrespective of which medium you're talking about. And finally, a request that we need to be represented as an industry if we really want a collective advantage from the government, as a country, as a overall industry.
we want those benefits, we have to be represented as an industry. So let's all work towards becoming one industry, not being represented as very ये big plywood अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वरना हमारा number बहुत कम हो जाता है. So yeah, that would be all from my side. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, let us give a big round of applause to our panelists. And another round of applause for a great person, Mr. Kiran Joshi, we are lucky to have him on the stage. He needs no introduction, so I'll just request Kiranji if you can sum up this discussion. Good morning, everybody, and thanks, Pragat, for calling me here and taking a risk of probably summing it up, where I think I had fellow panelists who has immense of experience and almost into every sector, right from, I would say, material to skill development to being a startup, and then a very young office furniture guy. And then, of course, Swastik, which has a vast experience. And then we have Satyenji, which is actually has the technology guy with us. So probably we have the board here who has been the most knowledgeable. And I'm sure that whatever they have said, everybody had contributed what is actually needed for scaling it up. Gentlemen, let me also put it little my case study about it. And Spacewood I started 25 years back. And I was a startup at that point of time, and I started from zero. And now let's say we are close to 500 crore company into this sector. So in 25 years, I have grown up from 0 to 500 crore. So with my experience, I'm going to share little more than what these guys have said. I'm saying little because I think these guys have said enough and sufficient what is needed for scaling it up. I think मेरा ना पहले थोड़े बहुत कुछ आपत्तियां भी हैं, तो मैं शायद ओपनली इसको मैं आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस दैट. ठीक है, नो ऑफेंस टू एवरीबडी. तो आई थिंक हम है ना ये जो बार बार कह रहे हैं OEM स्केलिंग इट अप, तो ये जो है ना ये डिफिकल्ट प्रपोजिशन हो जाता है. तो OEM मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि OEM बन के स्केल होगा या OEM ब्रांड बन के स्केल होगा. तो ये बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है. So brand can be a OEM brand also, OEM can be a consumer brand also. तो हमको ये भी देखना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट फील्ड में हैं या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है करके. तो कई बार हमारा है ना सपना है स्केल करने का, विश है, लेकिन विश के बाद स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है तो प्लान नहीं है. अगर स्ट्रैटेजी है तो बहुत सारे assumptions गलत हैं. तो प्लीज अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजीज समटाइम्स आर वेरी राइट. Your wishes gets converted to a strategy, strategies get converted to plan. The problem is in the gap. The problem is when you do a strategy, then the assumptions what you do, they normally go wrong. And that is where everything fails like a pack of cards. So this is where I have a challenge here. So if you want to grow as an OEM to little scaling it up, so you want to scale as an OEM कि कल मैं आज मैं probably कुछ मल्टीपल ब्रांड्स का बना रहा था, मुझे स्केल करना है तो मुझे IKEA के साथ जुड़ना पड़ेगा हाइपोथेटिकली. तो अगर मुझे IKEA के साथ जुड़ना पड़ेगा तो फिर तो जिसको मैं कहूंगा ना, तो देन द मैटर इज वेरी डिफरेंट. और मैं OEM से ब्रांड बनना चाहता हूं ताकि ब्रांड में मेरी इनफाइनाइट स्कोप है बढ़ने का. तो देन आई वुड से द स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट. सो यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट in which direction you have to go, and while taking a decision you really need to figure it out कि whether the current business into you are, does it have so much of a demand in and a very scale up basis. So that is what you need to figure it out. So somebody said generalist to specialist. I think that's a very right thing which has said. I would also add little bit to it, so what you guys have added. Generalist is also a great idea. I wouldn't say that generalist is a bad idea. Amul ice cream is a generalist ice cream. Please understand one thing in mind. But then that's a great idea. Generalist being a great idea, the generalist में आपको efficiencies built up करनी पड़ती है. So if you built up the efficiencies in being a journalist, you will be able to scale up in a very profitable way. So generalist is also a good idea. Specialty is a great idea, but then not everybody can be a specialist. If you want to be generalist, please add efficiency factor into it so that you can be profitable. And once you are profitable, then the scaling up becomes little easier. Then I think raw material point of view, I fully agree with you, because at the end of the day, anything
हम अगर बॉडी में खराब खाना खाओगे तो आपकी बॉडी बराबर नहीं रहेगी and probably you'll not be able to build up the muscle what you want. So in a similar way, I think the good of raw material will definitely help you in probably building a brand. ये अच्छे माल से ही सामान बनाते हैं. So I think it builds a good reputation, builds a good credibility into the market that okay, no, these guys use a good material. So I think that's a very great idea about it. One is important is Tomar said about the design. So I think design is very, very important item because most of the OEMs, I would rather say they get into Me Too factor. Now this Me Too factor is a very, very critical item. Now Me Too factor में होता क्या है? हम design में variations क्या करते हैं? मैं एक X color use कर रहा हूँ, वो Y color use करता है. तो there is no design variation. There is actually a material variation. And please understand, material variation is not a design variation. Dimensions variations is not a design variations. You need to change the form of the product. You need to change everything about the product. Now OEM में problem, अभी इंडिया का problem मैं बताता हूँ. Problem I will link it with the Indian context. So Indian context में जो designer का problem है ना is a very acute problem. Gopal, I would like to have your attention here. So we have one of the largest scaled up factory in 10 years. We have leave space here. And then we have also amongst the audience, we have Gopal also here. So having a very core designer into your team, Gopal is being, I would rather say, a backbone of leave space who has scaled up from probably zero to a more than $1 billion unicorn right now. And I would attribute a huge success to having Gopal or a very senior designer in place so that the scaling up was possible. So trust me, design plays a very crucial role if you want to go on a consumer side. If you don't want to go on a consumer side, if you want to be on an OEM side, then a research would play an important role. Here, a design is playing an important more from a consumer side. Here, I would say a research would play an important side that okay, मैं इस multiple technologies लेके मैं product को और कैसे product बना सकता हूँ, कैसे मैं minifix less product बना सकता हूँ, जैसे भी uniquely product बना सकता हूँ. So there are then that comes a research part of it. So either you have a design if you want to go on a consumer side, or do work on a research on a technology research side if you want to be an OEM. So either of it, you have to really take a choice out of it. Design is playing an important role. Then yes, I would say association. Somebody also said about the standardization of the industry. So I agree with you in terms of the standardization item of this industry. Let me put it like that. So we are into a phase right now where we are trying to come to a concept standardization. Now let's understand what is this item concept standardization is about. Concept standardization is about a modular furniture मुझे घर पे होना. ये एक demand standardization भी हो गई ना, तो भी we are into a first phase of the standardization. Then comes the product standardization. So at least हम एक सोच रहे हैं अभी, India is gearing up for a concept standardization. जैसे modular office furniture is a very matured industry. It started in 1992 when a lot of IT boom started. So concept standardization happened into modular office furniture very fast, and where every office today is now made up of modular office or modular workstation. Correct me if I'm wrong, Manoj, right? So now I've been witnessing this 1992 because I started my career as a modular office furniture maker. So in 30 years now, this concept standardization has happened. Now the product standardization is also open. Nobody talks about a workstation which is 5 feet 6 inches. Everybody will say either 5 feet or curvilinear, or they will talk about 4 feet, or they will talk about 3 feet. So there is a huge amount of product standardization happens, but product standardization happens at a little later stage. It happens at a little mature stage. That is why you go to IKEA and they have a product standardization because they come from a very matured world and matured demand right now. So product standardization is definitely going to be next phase. I'm sure it will come. Once it comes, then you will find that the scales are being built up and there is a lot of possibility of scale. So I think that's one of the very critical part of it. Now, one more important part. Now, few takeaways which I want to add it from my side. So let me also put it one thing very clearly, that having a small scale or a medium scale to a large scale, now, fundamentally the SOPs of business changes. I think that is where a lot of people miss out. Key SOPs of probably when you run a small factory, or as Satyan also rightly said, that having a close to the city, workers को आने में आसान है, demand को cater करने में आसान है. But then when you want to scale it up, the SOPs becomes completely different. Where
probably, and that is why most of people go wrong. They want to, it's like you built up a house, 1-story house with few columns. Having said that, then you want to build up a 20-story house there. So those columns won't withstand. So probably the structure only has to be changed. So ideally, that is a really important, that the structure of the organization structure changes. And that is where most of the people really don't do that. And if you do that, then only you are successful, because with the same set of structure, you really can't build up a 100-story house or a 50-story house. So SOP is changing, the structure changing. The important point is key product not getting stabilized. So let me also put it like that. This is a very important problem, that the scale up possibles only when the product stabilizes. When there is product stabilizes means there is a product which is acceptable and is a market fit. Lot of time what happens no कि हम scale up करने जा रहे हैं लेकिन product ही stable नहीं है, market fit भी नहीं है. Product अच्छा है लेकिन market fit नहीं है, उसकी demand ही नहीं है यार. तो market को वैसा चाहिए नहीं और हम बनाते जा रहे हैं करके. And then you think that you want to build it up. I think the product and the market fit are important aspect of it. Important is set of people. So please understand the set of people who are at the initial stage, who are running a factory or probably your businesses at the initial stage. And if you want to set it up, scale it up, they may not be right people. Let me put it very clearly with you. You will have to remove those people who are at the initial stage. No matter they are loyal, they are good to it, but sometimes they may not be suitable for a large scale basis. I'm being very upfront. Sometimes you can't, जैसे बोल रहे हैं ना कि पुराने एक्टर्स लेके भी नई पिक्चर नहीं बनाई जा सकती. दे मे बी गुड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. आज के डेट में मान लो मिथुन चक्रवर्ती को आप नए पिक्चर में डालोगे तो आई थिंक ही विल नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज ही हैज वर्कड इन द ओल्ड फिल्म्स. So sorry to say, they may remain as a well-wisher, they may mentor, but then they may not, because the trimming the fat, let me also put it, trimming the fat of the organization is also one step towards probably scaling it up. Sometimes you need to trim the fat, build the muscle, and then only you will have a better body to scale it up. So I think that is more important part. Now, most of the people also, they do sales, they do market, but then they don't really envisage the demand creation. They don't work on a demand creation. बड़ा बनना है लेकिन उसके लिए demand creation के लिए मैंने क्या किया. So I think the demand creation is very important part, because then everything is a derivative of demand. If you really don't create a demand of the product, then no matter whatever you do, whatever you take 100 acres of land, whatever built up efficiencies, whatever you built it up, you get a free land from the government, you get probably machines on a lease with 2% interest rate, or you get a skilled manpower, but then हमारे पास demand नहीं है भाई. हम सारे लोग हैं ना डिमांड के डेरिवेटिव है. लुक एट द न्यू मॉडल्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड राइट नाउ. दे वर्कड ऑन अ डिमांड फर्स्ट. दे क्रिएटेड ह्यूज डिमांड एंड देन दे स्टार्टेड द बैक एंड ऑफ इट. So I think that demand creation is very important part. Now the last is the alignment in the team. Now alignment in the team is very important. Sometimes we are not aligned in the team. The marketing is working in a different direction. The owner vision is X. People working in Y direction. So I think that alignment is going to be very critical when you really go down. The last important part is the not only vision but also the management bandwidth. Sometimes we diversify so much now कि management bandwidth ही नहीं है, then you will find a governance failure happening there. So then the governance is failing. So what is failing is the governance. यार बहुत कुछ कर लिया है लेकिन उसको जम ही नहीं रहा है, because मैनेजमेंट बैंडविड्थ ही नहीं इस सब चीजों को गवर्नेंस करने की, मॉनिटर करने की, रिव्यू करने की. सो गवर्नेंस फेलियर इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस द मैनेजमेंट बैंडविड्थ इज नॉट देयर. देन last but most important is also competing on price. So I think the competing on price may not be a very great idea, because sometimes I feel that it will lead to losses. Then if you're not being funded very sufficiently, then you will not be able to scale it up. I think these are the few takeaways from my side, and thank you very much. Thank you so much, dear panelists. It was such a wonderful and engaging, and I'm sure a lot of people would have gained from this. Thank you so much for your time. Thank you, Kiran sir. Thank you.